नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइन। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में तेजी, सेंसेक्स 100 पॉइंट तक चढ़ा, निफ्टी में भी 0.25% की बढ़त। आईटी और कैपिटल गुड शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। कच्चे तेल की कीमतों में दबाव, नायमेक्स क्रूड %0.5 गिरकर $50 पर और ब्रेंट पर भाव $60 पर पहुंचा। 27 मार्च से होंगे निफ्टी में बड़े बदलाव। निफ्टी 50 से डीएलएफ और जेएसपीएल को किया जाएगा बाहर। आइडिया और येस बैंक निफ्टी में होंगे शामिल। आज से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश समेत कई मुद्दों पर विपक्ष जता सकता है विरोध। सरकार ये नहीं कह सकती है कि हमें समय नहीं मिला, पूरा समय मिला है और इसलिए इस बजट को अलग होना ही पड़ेगा। वरिष्ठ बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा को सरकार से गेम चेंजर आम बजट की उम्मीद। कहा, वित्त मंत्री के सामने देश में निवेश बढ़ाना है वो सबसे बड़ी चुनौती। और शनिवार होने के बावजूद बजट के दिन खुलेगा बाजार। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने किया फैसला, दिग्गजों ने किया फैसले का स्वागत। चलिए क्विकली इंडियन मार्केट्स का चेक ले लीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट हफ्ते की आज से शुरुआत होती हुई। जी हां, बजट सत्र आज से शुरू होगा और इस हफ्ते कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइंड अप हैं। थर्सडे को रेल बजट, फ्राइडे को इकोनॉमिक सर्वे और सैटरडे को आम बजट की पेशकश होने वाली है। और आमतौर पे जैसे मैं पहले भी हाईलाइट करता हूं, ट्रंकेटेड वीक्स की बात करते थे, यानी कि वीक में कुछ छुट्टी होती थी। इस बार एक एक्सटेंडेड वीक के लिए आपको ब्रेसअप करना पड़ेगा, क्योंकि न सिर्फ ये 5 कारोबारी सत्र होंगे मंडे से लेकर शुक्रवार तक, बल्कि शनिवार को भी एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन आपको बजट के दिन देखने को मिलेगा। तो एक लॉन्ग वीक के लिए आपको ब्रेसअप करना है। और इस हफ्ते की शुरुआत एटलीस्ट हमने, इस ऑल इंपॉर्टेंट हफ्ते की शुरुआत हमने पॉजिटिव नोट के साथ करी है। कुछ हद तक कह लीजिए ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव थे, उससे भी भारतीय बाजार को मदद मिली है। तो सेंसेक्स और निफ्टी इस समय 1/3 से 1/4% की बढ़त के साथ कामकाज करते हुए सेंसेक्स में 85 अंक की मजबूती है। निफ्टी में 17-18 अंक के आसपास हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ। हालांकि ऐसा अच्छा कि दिन के हाईज जो कि मेरे ख्याल से 8869, 8870 के आसपास थे, उनसे कुछ हल्का जरूर हुआ है, लेकिन इस ऑल इंपॉर्टेंट वीक की शुरुआत एटलीस्ट कहना चाहिए पॉजिटिव नोट पे है। ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा हद तक मोमेंटम लूज हुआ है, खासतौर पे मिड कैप्स इस समय हल्के लाल निशान के साथ कंसोलिडेट करते हुए नजर आएंगे कहना चाहिए, लेकिन लाल निशान के साथ कामकाज हो रहा है। स्मॉल कैप्स में मोमेंटम इंटैक्ट, अच्छी बात, तो वो पॉकेट 2/3% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करती हुई, और इसी के चलते मार्केट ब्रेथ आज पॉजिटिव है। 3:2 का रेशियो, यानी कि जितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं उसमें 60% शेयर इस समय हरे निशान के साथ आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। बैंक सपोर्टिव है, लेकिन बैंक्स के अगर इंटरनल्स देखेंगे तो इंटरेस्टिंग है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में दबाव है, तो पीएसयू बैंक इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो लाल निशान के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन प्राइवेट बैंकिंग पैक में आज एक अच्छा मोमेंटम है, इसलिए बैंक निफ्टी ½ % के आसपास के गेन्स दिखाता हुआ। तो बैंक्स में जो मोमेंटम है पूरी तरह से मेरे ख्याल से वो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस ही उस मोमेंटम को ड्राइव कर रही है। बैंक्स एक हेवीवेट पॉकेट है, 30-31% के आसपास कॉन्स्टिट्यूट करती है इन बेंचमार्क्स का। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉकेट है आईटी, और वहां पे भी आज के ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे हैं खरीदारी आती हुई। इनके अलावा कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी में सिलेक्टिवली बाइंग इमर्ज होती हुई आज के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन पिछले हफ्ते का जो स्टार पॉकेट थी रियल एस्टेट की, आज वहां पे हल्का दबाव है। हालांकि वेटेज के लिहाज से वो पॉकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट में आज दबाव है। पीएसयू बैंकिंग, जिसको मैंने हाईलाइट करा था, आज कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए, और कुछ हद तक सिलेक्टिवली फार्मास्यूटिकल्स में भी आज के ट्रेडिंग सेशन में प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आगे रुक करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं आज सौदा आपका में आपकी तमाम क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए। आरके ग्लोबल के वीपी राकेश बंसल और जियोजीत बीएनपी परिवार के गौरांग शाह, आप दोनों का ही स्वागत है। राकेश, क्विकली से पहले सबके कॉल लेना शुरू करें, क्या करना चाहिए सर निफ्टी पे? क्या खरीदारी करेंगे इन लेवल्स के आसपास बजट वीक में, या फिर अवॉइड करेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ही फोकस होगा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो रहेगा ही रहेगा, बट साथ साथ अगर हम देखें तो निफ्टी का भी रुख क्लियरली पॉजिटिव है। निफ्टी एक ऊपरी लेवल से सप्लाई जरूर दिखा रहा है, बट नीचे में जो इसके क्रिटिकल सपोर्ट्स हैं 8790 के सपोर्ट को, उसको नहीं तोड़ रहा है। अगर वो सपोर्ट टूटता है तब मार्केट शॉर्ट टर्म में करेक्टिव मोड में जाएगा, बट एज ऑफ नाउ नीचे में सपोर्ट इंटैक्ट है। और अगर हम देखें तो डबल बॉटम अराउंड 8790 लेवल्स के अराउंड लगा चुका है। सिर्फ मार्केट में कमजोर कड़ी जो है वो बैंकिंग स्टॉक्स हैं। अगर बैंकों में कोई मेल्टडाउन होता है तब निफ्टी में करेक्शन देखने को मिलेगी। एज ऑफ नाउ तो मेरा ऐसा मानना है बजट से पहले इस वीक में
निफ्टी के अंदर और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर लॉन्ग ही जाना चाहिए। गौरांग, क्विकली, अगर मैंने निवेश कर रखा ऑलरेडी इस मार्केट में, तो बजट बड़ा इंपॉर्टेंट बाइनरी इवेंट आने वाला है, सबकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी माउंटेड है। इस ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले क्या पोर्टफोलियो कुछ हल्का कर लेना चाहिए, मुझे मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, या कॉन्फिडेंट रहूं जैसा मैं पहले था, इस इवेंट से नर्वस ना हूं और इस पोर्टफोलियो कैरी फॉरवर्ड करूं और इनफैक्ट इस हफ्ते खरीदारी करने के भी शायद सिलेक्टिवली मौके ढूंढूं? क्या अप्रोच रखूं मार्केट में और क्या अप्रोच आप रख रहे हैं सर? आशीष, पिछले हफ्ते और आज सुबह हमने यही कवायद की है कि अगर आपका नजरिया छोटी अवधि का है या मध्यम अवधि का है और अगर आपके पास आपका जो निवेश है उसमें मुनाफा है तो कैश जो पोर्शन है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो इवेंट लाइंड अप है, जैसे आपने जिक्र किया था, गुरुवार को रेलवे बजट और एफएनओ एक्सपायरी, उठापटक काफी होने की संभावना है, असमंजस स्थिति भी बन सकती है और रूल को लेकर क्या परिस्थिति भी खड़ी होती है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कैश कंपोनेंट पर ज्यादा जोर देना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। और जो शनिवार को बजट है और बाजार चालू है, वित्त मंत्री साहब क्या घोषणा करते हैं उसका विश्लेषण होने के बाद ही मेरे ख्याल से आपको एक निर्णायक तरीके से रणनीति बनानी चाहिए। हालांकि अगर शनिवार के पहले बाजार में नीचे की तरफ के दायरे आए, आपके पास निवेश लायक पूंजी है, तो लंबी अवधि के लिए सिलेक्टिव सेक्टर्स और स्टॉक में दिग्गजों पर ध्यान रखते हुए निवेश बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन छोटी मध्यम अवधि के लिए मुनाफा वसूली जायज होगी। तो अपने टाइम होराइजन के साथ आप मार्केट्स को अप्रोच करें, जैसे गौरांग हाईलाइट कर रहे थे, छोटी अवधि है तो मुनाफा वसूली कर लें, लंबी अवधि के निवेशकों को इस बाइनरी इवेंट से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ से हमारे साथ एसएम भट्ट साहब जुड़ रहे हैं। भट्ट साहब हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, मैं आपका मतलब कि पैनल का जो है ना बहुत जो फैन हूँ और 10 साल से मैं लगातार इसको देख रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर। और मैंने जो है ना राशन टोब्रो जो 2007-8 में जो है 1700 के एवरेज में खरीदे हुए हैं 30 शेयर। और उसके सर मुझे आईसीआईसीआई बैंक भी है मेरे 2007-8 का, एवरेज प्राइस 350 से 60 के लगभग है। और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैं आईसीआईसीआई बैंक को कनकोर या अदानी उसमें इंटरप्राइज में वो स्विच करना चाह रहा हूँ। मैं समझा, आईसीआईसीआई बैंक में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, स्विच करना चाह रहे हैं? अदानी पोर्ट या कनकोर में मैं उसको आईसीआईसीआई बैंक को स्विच करना चाह रहा हूँ। अगर मेरे को सलाह मिलेगी मैं होल्ड करूंगी, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ 5-10 साल के लिए। ठीक है, तो एक एलएनटी हो गया। दूसरा आपके पास आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक पे गौरांग क्या रेको होगी और क्या एडवाइजेबल होगा कि आईसीआईसीआई बैंक से निकलकर अदानी पोर्ट या फिर कॉनकॉर जैसी कंपनी जो उन्होंने खुद ही 2 सिलेक्ट कर रखी है वहां पे इस पैसे को मूव करें? क्या वो सही रणनीति हो सकती है सर? आशीष, हम इनको राय देंगे तो दोनों में ही बने रहे और बहुत ही पुराना निवेश है इनका, 2007-8 का ये बता रहे हैं इनका निवेश है और अच्छा खासा इनको मेरे ख्याल से मुनाफा मिल रहा होगा। एज अ डिस्क्लोजर दोनों पर ही हमारी पॉजिटिव कवरेज है और अभी माहौल ऐसा है कि बैंकिंग में ब्याज दरें नीचे आने का माहौल शुरू हो गया है, जो कि बहुत सकारात्मक बात है बैंकिंग के लिए। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक ने नतीजे में निराशा बिल्कुल थी, लेकिन हमें लग रहा है कि एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस चल रहा है, अब यहां से सुधार की उम्मीद रख सकते हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक में बने रहें। एलएनटी एक सबसे बड़ा दिग्गज कैप गुड्स इंजीनियरिंग स्पेस में और जिस प्रकार से कॉर्पोरेट इंडिया में केपेक्स में निवेश का समय शुरू होगा, अगर सरकार सही तरीके से कदम उठाते हैं तो हमें लग रहा है कि यहाँ भी इजाफा हो सकता है। और अगर इन्होंने इतना पुराना निवेश है तो मेरे ख्याल से इनको बोनस शेयर्स भी मिले होंगे एलएनटी के। बिल्कुल। तो हमारी तो राय है कि यहाँ पर बदलाव न करें, दोनों में बने रहे। और दोनों ही काउंटर्स आज ट्रेडिंग सेशन में मजबूती के साथ कामकाज करते हुए एलएनटी तो मेरे ख्याल से 1.5% के आसपास के अपटिक्स हैं आज के कारोबारी सत्र में आपकी स्क्रीन पर, अब 1700 के लेवल्स के पार जाता हुआ। लेकिन चलिए रुद्रपुर से राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी आए, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास उज्जवला एनर्जी के हैं सर 3325 शेयर। कितने भाव पे लिए हुए हैं सर? 27 पे सर। चलिए आपकी बाइंग के आसपास है। और दूसरा स्टॉक भी है मेरे ख्याल से कोई आपके पास? दूसरा है सर अभी मोजर बियर है सर। मोजर बियर है, ओके। यस सर, वो आज ही खरीदा सर मैंने। किस भाव पे खरीदा है? क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से 9-10% पॉजिटिव मूव दिखा रहे हैं। हाँ 16 पे खरीदा। 16 पे, तो चलिए आज ही अच्छा खासा अपटिक मिल गया आपको। इन दोनों में टाइम होराइजन क्या है? आप मेरे को लग रहा है ट्रेडर है ना? नहीं सर, हाँ शॉर्ट टर्म है सर। शॉर्ट टर्म है। राकेश, क्या करना चाहिए इनको इन दोनों ही काउंटर्स में? मोजर बेयर जो पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से 50% का पॉजिटिव मूव और वो आज भी सस्टेन होता हुआ, आज भी 9-10% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने को मिल रही है। सुजलॉन इन्होंने इन्हीं लेवल्स के आसपास बाइंग करी है, जो तमाम खबरें थी क्या उसने पचा ली है या चार्ट्स पे लग रहा है अभी भी मजबूती है, बने रहना चाहिए? देखिए आशीष जी, सुजलॉन के चार्ट में मजबूती है, रैली डेफिनेटली देखने को मिलेगी, बट जिन लेवल्स पे इन्होंने खरीदना है वो खरीदने के स्तर नहीं थे। अगर हम देखें तो 19, 20, 21 के अराउंड
स्टॉक जब न्यूज आ गई थी तब भी आराम से मिल रहा था। चूंकि स्टॉक को ऑलरेडी ले चुके हैं, ट्रेंड अप है, मैंने राय दूंगा पोजीशन को होल्ड करें, बट एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 23 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं। और जिस तरीके से स्टॉक का ट्रेंड है, एक ऊपर में रैली जो है स्टॉक को 30 से 32 रुपए तक ले जा सकती है। पोजीशन को होल्ड करें, स्टॉप लॉस लगा के, टारगेट 30 से 32 के लिए। मोजर भी जिस तरीके से, मोजर का भी ट्रेंड अप है, मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है। मेरे को लगता है स्टॉक 18 से 20 रुपए के भाव दिखा सकता है, बट काफी इन्होंने रैली नीचे से मिस करी है, उसके बाद खरीदा है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र के इस मंदिर में संवाद हो, हर विषय पर गहराई से बहस हो और इस मंथन से अमृत निकले जो देश के गरीब से गरीब काम आए, इस संकल्प के साथ ये बजट सत्र का आरंभ हो रहा है। कल भी मैं बहुत लंबे समय तक सभी साथी दलों के नेताओं से मिला था, उनके विचार भी सुने हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि देश हित के हर महत्वपूर्ण इश्यू पर गहरी चर्चा हो। बजट सत्र किसी भी सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है, देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास बजट में झलकता है और मुझे विश्वास है कि बजट सत्र बहुत ही अच्छे वातावरण में, सहयोग के वातावरण में और कुछ अच्छा करने की दिशा में मिलकर के प्रयास करने का एक अच्छा अवसर बनकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए, ध्यान रखें आज से पार्लियामेंट में कामकाज की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। ऑल इंपॉर्टेंट बजट सेशन का आज से शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो नई सरकार आई है, इसको ये पहला फुल ईयर स्पेंडिंग प्लान अनवेल करने का मौका मिलेगा और तमाम कई सारे रिफॉर्म्स अटके हुए थे, कई सारे की बिल्स अटके हुए थे, उनको जंप स्टार्ट करने की कोशिश करी जाएगी। ध्यान रखें, कई सारे अमेंडमेंट ऑर्डिनेंसेस के जरिए सरकार मूव करी थी। अब जरूरी होगा यहाँ पे कि विपक्ष साथ दे। कई सारे ऑर्डिनेंसेस को बिल्स में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होने वाला है सरकार के लिए। और खासतौर पे हमारे दोनों एक्सपर्ट जो बैठे हुए हमारे साथ, ऐसे कई एनालिस्ट, कई सारे इकोनॉमिस्ट देखना चाहेंगे इस बजट में किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग को ये सरकार बूस्ट देने की कोशिश करती है। तो बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है, कई सारे ऑर्डिनेंसेस में सरकार को आगे मूव करना है। इस बजट सेशन की जब शुरुआत आज से होने वाली है, 11 बजे के आसपास से होगी और इंपॉर्टेंट है। पिछली बार आपको याद होगा विंटर सेशन समाप्ति हुई थी दिसंबर फैग एंड में जाके हुई थी, तब ऑपोजिशन अनरेस्ट के चलते बिल्कुल भी कामकाज नहीं हो पाया था। तो देखना होगा इस बार भी, हालांकि जैसे हमने हेडलाइन भी मेंशन करा, बड़ा अनरूली सिनेरियो होने वाला है, लेकिन देखना होगा। कल वेंकैया नायडू ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात करी है ताकि मेन अपोजिशन पार्टी इस सरकार की मदद करे इन इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस में मूव कराने में। लेकिन चलिए आप एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। गौरांग और राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद भी जो आपके तमाम सवाल आए उन उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हमारे साथ आसनसोल से अरिंदम जी जुड़ रहे हैं। अरिंदम जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा पास आंध्रा बैंक है, 70 रुपीज में खरीदे थे। ओके। 250 शेयर और टायर है 245 में 100 शेयर। आंध्रा बैंक है 70 रुपए पे खरीदा था, 87 के आसपास चल रहा है, तो 17 रुपए पर शेयर के आसपास आपको मुनाफा हो रहा है। दूसरा है अपोलो टायर, 248 की खरीद है, यहां पे प्रेशर है, 180 पे इस समय कामकाज करता हुआ। राकेश, दोनों ही स्टॉक्स में क्या करना चाहिए इनको, आंध्रा बैंक और अपोलो टायर्स? आशीष जी, आंध्रा बैंक को तो होल्ड करना चाहिए। हालांकि बैंकिंग अभी हम देखें तो शॉर्ट टर्म में परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट अगर पीएसयू बैंकिंग में भी रैली बनेगी आगे चल के, और जब रैली बनेगी तो आंध्रा बैंक एक अच्छा आउट परफॉर्मर साबित हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है आंध्रा बैंक को होल्ड करना चाहिए। 2 से 3 महीने में 104 के भाव इसमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ अपोलो टायर देखें तो स्ट्रक्चर नेगेटिव है, ऊपर से अच्छी सप्लाई देखने को मिली है। मेरा ऐसा मानना है किसी भी रैली में अपोलो टायर से निकलने की कोशिश करनी चाहिए।
ओके, चलिए आप संगरूर से सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी हाय सर, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। अपना हमारा सवाल है जी, पहले अशोक लेना है जी, हमारे इसका टारगेट 90 रुपए का चाहिए जी हमारे को। 90 रुपए का टारगेट आपने पहले से सेट कर रखा है, जानना चाहते हैं कितना समय वेट करना पड़ेगा, सही? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो राकेश आप ही के लिए सवाल है, 69 के आसपास चल रहा है अशोक लेलैंड, 90 का टारगेट इन्होंने सेट कर रखा है, क्या जल्दी मिल सकता है इनको? कितना समय लग सकता है, कितना वेट करना पड़ेगा? आशीष जी एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने काफी ट्रेडर इन्वेस्टर देखे हैं जो कि ऐसे मेंटल टारगेट सेट कर लेते हैं और प्रॉफिट में जो चीज होती है वो नुकसान में चले जाती है, क्योंकि ये हमारे सेट करे हुए टारगेट होते हैं। मेरा ऐसा मानना है अपने हिसाब से टारगेट सेट नहीं करना चाहिए। स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, टेक्निकली मुझे लगता है 80 के लेवल मुमकिन है, 80 के अराउंड मुनाफा वसूली करनी चाहिए। चलिए गौरांग आपसे भी अशोक लेलैंड के बारे में, क्योंकि एक बड़ा मल्टी बैगर रहा है, मेरे ख्याल से मुझे याद है 15 रुपए, सब 15 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, 70 के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ। क्या आपकी कवरेज है इस कंपनी पर? अगर हाँ तो आपके इवेंचुअल टारगेट्स क्या है इस कंपनी को लेकर? कवरेज तो है, लेकिन जो 90 रुपए का इन्होंने लक्ष्य बनाया है वो मेरे लिए मुश्किल है बताने के लिए कब हासिल हो सकते हैं। हालांकि कवरेज है, उसके बलबूते पर हम ये बिल्कुल राय दे सकते हैं कि अगर आपके पास जोखिम बर्दाश्त करने की क्षमता है तो आप यहां पर बिल्कुल बने रह सकते हैं। और जिस प्रकार से कंपनी ने अपने बैलेंस शीट पर, वित्तीय हालत पर थोड़ा बहुत जोर दिया है डेट को कम करने के लिए, वो एक सकारात्मक बात है। और जमीनी स्तर पर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, लाइट कमर्शियल व्हीकल और मीडियम कमर्शियल व्हीकल, यहां पर सुधार और मांग बढ़ने की संभावना बिल्कुल है आने वाले समय में। इस सूरत हाल में अगर आपके पास, जैसे मैंने बताया, कि जोखिम बर्दाश्त करने की क्षमता है तो आप बिल्कुल यहां पर बने रह सकते हैं। चलिए, इस बीच बड़ा तगड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं, इनफैक्ट स्मॉल कैप में तो फिर भी मोमेंटम है, मिड कैप्स लाल निशान में इस समय कामकाज करते हुए फ्लैट कहना चाहिए। लेकिन बॉम्बे रेयन जहाँ सुबह एक ब्लॉक डील हुई थी, 17.5% की तेजी। आईटीडी सीमेंटेशन जहां पे ऑर्डर बैक करने की बीते हफ्ते खबरें आई थी, मोमेंटम पॉजिटिव साइड में कंटिन्यू होता हुआ 15% मजबूत है। मधुकौन प्रोजेक्ट जैसे इंफ्रा कंपनीज में हम देख रहे हैं 14% के आसपास का पॉजिटिव मूव। मॉनेट इस्पात, जितनी भी छोटी कंपनियों को इस बिडिंग प्रोसेस में माइंस आवंटन हुई है उन सब में बड़ा शार्प रिएक्शन देखने को मिला है। मॉनेट इस्पात 12% मजबूती के साथ। मोजेबे जो हमने डिस्कस करा, आज फिर से 10% का पॉजिटिव मूव है। रोल्टा में हम देख रहे हैं आज 9% की तेजी आती हुई। सेबको एक कमर्शियल व्हीकल और रेलवे से जुड़ी दोनों साइड से पॉकेट की कंपनी कह सकते हैं आप, तो ऑटो एंसिलरी और रेलवे से रिलेटेड स्टोरी 7.5% के आसपास का पॉजिटिव मूव है। जिलेट में फिर से 7% के आसपास की तेजी आती हुई। बीपीएल जैसी कंपनी 7% के आसपास, आवाज की एक्सक्लूसिव खबर जो आई थी उसके बाद तगड़ा मोमेंटम आता हुआ। तो कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और तगड़े मूव स्टॉक्स दिखाते हुए। लेकिन चलिए आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। राकेश और गौरांग हमारे साथ बने हुए हैं, ब्रेक के बाद भी आपके तमाम सवालों का सिलसिला जो है उसे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब से कुछ ही देर बाद वो जॉइंट सेशन को संबोधित करेंगे प्रेसिडेंट साहब और उसके बाद बजट सत्र की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। इस हफ्ते हम सबके सहन में एक ही सवाल होगा कि इस बजट से पहले क्या खरीदारी करें, जहां पे शायद बजट तक या बजट के बाद तगड़े अपसाइड वो काउंटर्स डिलीवर कर सकते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स राकेश और गौरांग हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे जानते हैं ये कहां पे रडार, कौन से स्टॉक्स को रडार पे रख रहे हैं, कहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढ रहे हैं। गौरांग आप पहले बताएं, कोई ऐसे 2 स्टॉक्स जहां पे मैं खरीदारी कर सकता हूं बजट की थीम को लेकर, या फिर जहां पे बजट के बाद भी एक स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां पे मेरे लिए खरीदारी करने के इस समय मौके हैं? देखिए आशीष, बजट की थीम तो मेरे ख्याल से बहुत ही असमंजस स्थिति पैदा कर देती है जहन में, और बुनियादी तौर पर आकलन करते हैं तो जिस प्रकार से हमारा मानना है 2 स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर से हमने दिग्गज में चुने हैं। पहला है बीपीसीएल, क्योंकि कच्चे तेल का जिक्र अभी अभी आप कर रहे थे, हमें लग रहा है कि आने वाले समय में और भी नीचे जाएंगे, और जिस तरीके से नतीजे आए बहुत ही सकारात्मक, और आने वाले समय में नीचे की तरफ कच्चे तेल के दाम एक बहुत ही बेहतर पहलू खड़ा कर सकते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। बीपीसीएल का विकल्प हमने सामने रखा है, और यहां पर हमने हाल ही में हमारा लक्ष्य जो है 1 साल या उससे अधिक के नजरिए से बढ़ा करके 830 का किया है। तो ये बजट में क्या होगा, इसके अलावा भी अगर बुनियादी तौर पर आप यहां पर निवेश करते हैं तो बहुत ही बेहतर स्टॉक है बीपीसीएल ऑयल मार्केटिंग कंपनी में से। दूसरा है निजी बैंक्स में से एक्सिस बैंक।
नतीजे ब्याज दरों के सिलसिले नीचे की तरफ, ब्रांच और एटीएम एक्सपेंशन, लोन बुक ऑफटेक कॉर्पोरेट एज वेल एज रिटेल और कमर्शियल व्हीकल्स में भी जिस तरीके से हम अभी भी जिक्र कर रहे थे अशोक लेलैंड के बारे में, वहां पे भी अगर व्हीकल लोन्स में वृद्धि होती है तो एक सकारात्मक सा रुझान आ सकता है। तो एक्सिस बैंक और एक विकल्प है, यहां पर 1 साल या उससे अधिक के नजरिए से हमने हमारा लक्ष्य 680 का बनाया। और जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि बजट के पहले अगर कुछ ट्रेडिंग सेशन में आपको आने वाले ये जो 3-4 दिन है बजट के पहले, उसमें थोड़े नीचे की तरफ के दायरे मिलते हैं तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बेहतरीन मौका होगा लंबी अवधि के नजरिए से ये दोनों ही स्टॉक में निवेश करने के लिए। ओके राकेश, आप कौन से स्टॉक्स, या फिर मैं आपसे आसान शब्दों में जानने की कोशिश करूं, कौन से स्टॉक्स की चार्ट्स बेहद मजबूत हो रही हैं इस बजट से पहले और उनमें आपको लगता है खरीदारी करने के मौके होंगे? सर, कोई ऐसे 2 स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई करे हो? बिल्कुल आशीष जी, बजट को ध्यान में रखते हुए आइडेंटिफाई करें, बट ये मेरे 2 स्टॉक्स बजट थीम पे नहीं है, बट बजट वीक में जो वोलेटिलिटी होगी उस वोलेटिलिटी को झेल सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है बजट वीक में जो वोलेटिलिटी होगी, अगर मार्केट में कोई गिरावट आती है तो स्टॉक गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पहला कॉल होगा पिरामिड एंटरप्राइजेस पर। स्टॉक का न्यू हाइस पे स्टॉक खड़ा हुआ है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, बड़ा स्ट्रांग टेक्निकल पैटर्न है। मेरा ऐसा मानना है 820 एक अच्छा बेस है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 15 से 20 दिन में 950 प्लस के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा कॉल होगा थॉमस कुक पर। अगेन स्टॉक एक नए हाइस के पास में है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, काफी स्ट्रांग टेक्निकल पैटर्न है। 189 190 एक अच्छा बेस है, 189 के नीचे के स्टॉप लॉस होने चाहिए और मेरा ऐसा मानना है 228 के स्तर ऊपर में 15 से 20 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो पिरामिड एंटरप्राइजेस 820 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, 950 प्लस के लेवल्स। थॉमस कुक में भी 189 के नीचे अपने स्टॉप लॉस प्लेस करें और यहां पे आपको 228 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। वहीं लाइकवाइज बीपीसीएल, जहां पे कच्चे तेल की जो कीमतें गिर रही हैं, रिजल्ट स्ट्रांग होने, तो फंडामेंटली स्ट्रांग फुटिंग पे कंपनी नजर आ रही है। 1 साल में 830 या उससे ऊपर के लेवल शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। लाइकवाइज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस, इसको लेकर गौरांग हमेशा से बुलिश रहे हैं, उसमें एक्सिस बैंक चुना है। चाहे वो रिजल्ट स्ट्रांग हो, चाहे वो रेट्स जो दरें अब घटती हुई नजर आएंगी उसका भरपूर फायदा मिलेगा, तो ये कंपनी भी फंडामेंटली अच्छी फुटिंग पे नजर आती है। 680 के लेवल्स के लिए आप अगले 12 महीनों में अप्रोच कर सकते हैं। इस दौरान बजट वीक में शायद अगर इन स्टॉक्स में कमजोरी आती है तो आपके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स होंगे यहाँ पे एंटर करने के इन स्टॉक्स में। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं और ब्रेक के बाद राष्ट्रपति साहब जो दोनों ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे वहां पे भी रुक करेंगे। I welcome you to the joint sitting of the 2 houses of the Parliament with the belief that your deliberations will be productive and useful. Dr. Shama Prasad Mukherjee had said, and I quote, "The greatest strength of India is her rich spiritual and civilizational heritage." Unquote. The core values of our civilization emphasize universal good, welfare of all human beings. The fundamental tenet of my government is Sabka Saath, Sabka Vikas, all together development of all. Within a span of 9 months, my government has articulated and embarked on a comprehensive strategy for unleashing the full potential of our economy and its precious resource of 125 crore people. Measures have been initiated to start action in a range of fields. Poverty elimination to creation of wealth, skill development to conquering space, tapping demographic dividend to diplomatic initiatives, enhancing ease of doing business to putting in place a stable policy framework, empowering individuals to ensuring quality infrastructure, ending financial untouchability, to making the country a manufacturing hub,
containing inflation to stimulating economy, igniting minds to ensuring inclusive growth, promoting cooperative federalism to encouraging a competitive spirit among the states. A strong beginning has been made. A promising future awaits us. Honorable members, poverty is a bane to dignified human existence. Development is actualized only when the last person gets a sense of fulfillment, especially regarding his minimum needs. Pandit Deendayal Upadhyay had laid emphasis on holistic development of each and every human being. Ekatma Manvata Darshan, my government is placed to work for the welfare of the poor, the marginalized, and the vulnerable sections of the society. Financial inclusion is critical to poverty elimination. My government launched an ambitious Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana to provide universal access to banking facilities. A bank account having inbuilt accidental insurance with a RuPay debit card. I am happy to state that the coverage under this scheme is close to 100%, with a record 13.2 crore new bank accounts being opened, 11.5 crores RuPay debit cards being issued, and over rupees 11,000 crore being deposited. The unprecedented target was achieved in less than 6 months, making it the largest such program globally. To ensure that the benefits of development programs reach the last intended beneficiary without leakages and impediments, direct benefit transfer program is being implemented with renewed vigor. The biggest direct cash transfer program in the world, PAHAL, for transfer of LPG subsidy has been extended across the country from 1st January 2015. So far, covering 75% of the user households. In all, 35 schemes have been brought under direct benefit transfer architecture. Special emphasis is at us to make other entitlement coverage universal. Honorable members, Swachhta is an article of faith for my government. Swachhta will have an overarching impact on the overall quality of life and well-being of a person, particularly the poor. Swachh Bharat mission has been launched to achieve a clean and open defecation-free India by October 2019. Government has rolled out Swachh Vidyalaya program and is committed to construct a toilet in every school before 15th August 2015. Swachhata has a cascading impact on national development and the potential to generate wealth from waste. Sanitation and the idea of Swachhata require changing the mindset of the people. My government exhorts each and every individual to be an active participant in this mission. I appeal to all honorable members of Parliament to spend at least 50% of their pillars funds on Swachh Bharat mission. Honorable members, India lives in a village. My government attaches the highest priority to sustainable socio-economic growth
of rural areas. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme can be a powerful weapon to combat rural poverty. While implementing Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme with renewed vigor, emphasis is being placed on improving quality and durability of assets under the program. Besides, mandating that at least 60% of expenditure be directed for creation of agricultural infrastructure. In keeping with my government's focus on Skill India, Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana and Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Yojana have been announced. Sanshad Adarsh Gram Yojana, launched in October 2014, focuses on integrated and holistic development of our villages with active involvement of members of parliament. Housing is a fundamental requirement for dignified living. My government is steadfast in fulfilling the aspirations of all households, particularly the poorest of the poor, to have a dwelling unit under the mission of housing for all by 2022, marking 75 years of our independence. A set of fiscal and non-fiscal incentives have been devised to leverage the value of land holding with government and to afford flexibility to state governments in designating their own customized housing programs. To aid investment in housing sectors, my government has liberalized FDI policy, increased tax incentives for housing loans, and enhanced the corpus of National Housing Bank. Honorable members, my government attaches paramount importance to safeguard the interests of farmers and families affected by land acquisition, while taking utmost care to protect the interests of farmers, including their compensation entitlements. The right to fair compensation and transparency in land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act has been suitably defined to minimize certain procedural difficulties in acquisition of land, inevitably required for critical public projects of infrastructure and for creation of basic amenities like rural housing, schools, hospitals, particularly in remote areas. Honorable members, Kishan is the sentinel of our food security. Annadata Sukhi Bhavo have been one of our fundamental civilizational values. My government attaches enormous importance to the well-being of farmers. This will need value-added agriculture, market reform, use of technology, and improving productivity in areas with untapped potential. The year 2015 has been designated as International Year of Soils. In view of the critical role of soil for productivity and farm output, a soil health card scheme has been launched. Price Stabilization Fund with a corpus of Rs 500 crore has been set up to perishable commodities. To address the irrigation requirements of every village in an effective and sustainable manner, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana is being launched. Extensions programs have been devised targeting resource poor, small and marginal farmers, particularly focusing on organic farming and greenhouse technology. Rashtriya Gokul Mission has been launched with the objective of conserving and developing indigenous cattle breeds. Honorable members, food processing has immense potential
in generating employment in the rural areas, particularly in the landless poor, besides guaranteeing remunerative price for the farm produce, creating infrastructure in rural areas to minimize supply chain losses is a priority. A special fund of rupees 2,000 crores to provide affordable credit to the units in 72 notified food parks has been made operational. 2 mega food parks at Tumkur and Fazilka, each to provide direct, indirect employment to 30,000 people, have been commissioned in the last 6 months. Former Prime Minister Sri Atal Bihari Vajpayee had said, and I quote, "Poverty has multiple effects. Besides impacting our economy, it corrodes our democracy," unquote. Inclusive growth, covering the poorest of the poor from the most vulnerable and disadvantaged sections of our society, is my government's topmost priority. Thrust has been given to streamlining the scholarship schemes for students from SC, ST, OBC and minority communities to ensure timely disbursement to the beneficiaries. Government has set up a new venture capital fund for SC entrepreneurs. To upgrade skill and training in traditional arts, crafts of minorities, a new scheme upgrading the skill and training in traditional arts, crafts for development, Ustad, is being launched. Outcome-based integrated approach has been adopted for tribal development under the Ban Bandhu Kalyan Yojana. Nanaji Deshmukh scheme is being launched for construction of hostels for denotified, nomadic and semi-nomadic tribes. Honorable members, education is the priority of priorities for my government. Pade Bharat, Bade Bharat has been launched to improve foundational learning outcomes. An initiative to map the entire country on a GIS platform to identify habitations without schools has been taken. Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teachers Training has been launched to empower and increase the capacity of teachers. The Rashtriya Aviskar Abhiyan has been announced to imbibe scientific temper among students to ensure access to education in the remotest areas. Ishan Vikas and Ishan Uday schemes have been started with focus on students of northeastern region. My government has formulated national sports talent search schemes for encouraging sporting talent amongst children in the age group of 8 to 12 through National Sports Development Fund and Target Olympic Podium. Honorable members, India has the largest population of youth in the world. Majority of our population is already in the working age group. To tap this demographic dividend and to bridge the demand-supply gap in skilled workforce, my government has created a new Ministry of the Skill Development and Entrepreneurship with the theme, Hunar Hai to Kalyan Hai. A new national policy for school development and entrepreneurship is on the anvil to align skilling initiatives with global standards. Focus will be on youth from deprived households in rural areas. Public-private partnership is being fostered to create skill development models and channelizes CSR funds into skilling activities. Honorable members, my government is committed to providing affordable and accessible health care
to all its citizens, particularly the vulnerable sections, in an efficient and equitable manner. To reduce preventable deaths, India Newborn Action Plan has been initiated and 4 new vaccines have been approved. Mission Indradhanush has been launched to achieve universal immunization with special focus on 184 high-priority districts across the country. To create an inclusive, enabling, and empowering environment for persons with disability, my government has launched new scholarship schemes for students with disabilities. A national helpline with toll-free numbers has been launched for those who need help against drug de-addiction and for rehabilitation. My government has recently elevated the erstwhile Department of Awaaz to a full-fledged ministry with an objective to increase the global and local footprint in the traditional system of healthcare, duly recognized that our villages have been repositories of our rich Ayurvedic heritage. National Ayush Mission has been launched to promote cost-effective Ayush services, strengthen the education system, and facilitate availability of quality Ayush drugs. Honorable members, women have had a place of reverence in our society since time immemorial. My government has taken several measures to empower and protect the dignity of women, to provide complete support to women affected by violence. One-stop crisis centers, one in every state, are being set up for provision of integrated services, including medical aid, police assistance, temporary shelter, and legal and psychosocial counseling. Another initiative has been the launch of Himmat, a mobile-based application to ensure women's safety in Delhi. Honorable members, the unabated decline in child sex ratio since 1961 is a matter of grave concern. This trend has to be reversed to ensure survival, protection, and education of the girl child. My government has launched Beti Bachao, Beti Padhao Abhiyan, which seeks to change mindsets to celebrate the girl child. A new small savings scheme, Sukanya Smridhi account, has been notified for enabling the education of the girl child. A bill to amend Juvenile Justice Act has been introduced in Parliament to reform the law relating to juvenile offences. Honorable members, Shramik is the backbone of our economy. My government believes in Shram Eva Jayati and has taken several labor welfare measures. Apprentice Protsahan Yojana has been launched to promote apprentice in micro, small and medium enterprises in manufacturing sector. EPF subscriptions have been made portable, benefiting casual workers in the unorganized sector. Under the Employees Provident Fund Act, the statutory wage ceiling and the minimum pension have been enhanced to Rs 15,000 and Rs 1,000 respectively. While my government is fully committed to expand the job market and to promote the welfare of workers, it is also committed to bringing in transparency and accountability in enforcement of labor-related regulations. To this end, Shram Subidha portal
has been launched to ensure ease of doing business by allowing industry to register online and file a simple online return instead of 16 separate returns. A transparent online inspection scheme has been launched. Recent amendments to the Apprentices Act 1961 have made the legal framework friendly to both industry and employable youths. Honourable members, legal reform is one of the priorities of my government. My government believes that governance and reforms are combined effort of Team India consisting of Parliament, Union government, state legislatures, state governments and the people of India. An example of this collaborative effort is the reform in the process of appointment of judges to the High Courts and Supreme Court and the legislation to set up National Judicial Appointments Commission. The government is also committed to repeal the obsolete and redundant laws. A committee constituted for this purpose has identified 1,741 central acts for repeal under various categories. Honourable members, maximum governance, minimum government is the guiding principle of my government, with an aim to take governance to the doorsteps of the poorest of the poor in remotest areas. Focus is on simplification of official procedures and reducing the decision-making levels in government by leveraging technology. The system of group of ministers has been dispensed with, and emphasis is on swift decision-making, while introducing stricter and sterner measures to deal with corruption. Effort is being made to ensure that sufficient safeguards are in place to protect bona fide decisions taken in public interest and to inspire confidence in the civil service. My government is finally committed to engage people in the process of governance and policy making. MyGov online platform, a path-breaking initiative, has been launched. This platform has ensured public participation in decision-making and ideation of various national flagships programs like Swachh Bharat Mission, Namami Gange, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and Niti Aayog. My government has envisioned an ambitious umbrella program, Digital India, to prepare India for technology-based transformation and citizen-centric, transparent governance with service orientation. Aadhaar-based attendance system and Jivan Praman, Aadhaar-based digital life certificate portal have shown that innovative use of technology can make enormous difference. Measures are being taken to accomplish digital inclusion in rural areas, small towns, northeast and other remote areas, opening up immense job opportunities in these areas. Promoting manufacturing of electronic goods has been an area of thrust. My government is placed to decentralization of power, and as an important step in this direction, the Planning Commission has been replaced with a new body, the National Institute for Transforming India, Niti Aayog. The underlying spirit of Niti Aayog is to foster the spirit of cooperative federalism so that union and state governments can come on a platform to forge a common national agenda for development with thrust on empowering the impoverished. Honourable members, as a result of my government's sustained efforts and series of policy initiatives, our economy is again on the high growth trajectory.
According to the latest estimates, our GDP is growing at 7.4%, which makes India the fastest growing large economy in the world. Inflation and food inflation in particular are at record low due to number of decisive measures taken by my governments. Fixed capital formation, which faced a near stagnation in the last few years, has increased. Capital markets are upbeat. Our external sector is now far more resilient, particularly with a moderate current account deficit and a broadly stable rupee. Our foreign exchange reserves have been substantially augmented. While my government has intensified efforts to bring greater efficiency and equity into the tax system, prudence on expenditure management is also high on the agenda of my government. A constitutional amendment bill has been introduced to bring in goods and service tax that will simplify the indirect tax regime, broaden the tax base, and result in better tax compliance. Honourable members, my government is committed to taking all possible measures to stop generation of black money, both domestically and internationally. These measures include putting in place robust legislative and administrative frameworks, systems and process with due focus on capacity building, integration of information through technology, and the fast-tracking prosecution. Financial sector institutional restructuring is a priority area. My government will expedite implementation of the recommendations of the Financial Sector Legislative Reforms Commission. SEBI's new foreign portfolio investment regulation have established a unified, simple regulatory framework. The Insurance Laws Amendment Ordinance 2014 has promulgated enhancing the foreign equity cap from 26% to 49%, while safeguarding Indian ownership and control. This will enhance capital availability and ensure better access to insurance services, especially in rural areas for economically weaker sections. Small banks and payments banks are being permitted to expand the reach of the banking system. Honourable members, my government has taken major initiative for improving ease of doing business through simplification and rationalization of existing rules and procedures. Leveraging IT and the use of modern technologies is a key strategy. Single window in hub-spoke model is being made a reality. Applying for industrial license and industrial entrepreneur memorandum can now be done online on 24/7 basis on the eBeej website. A number of entry and exit regulations have been eased out. My government has launched the Make in India program, which aims to create a wholesome ecosystem to transform India into a manufacturing hub. FDI in railways has been opened up selectively to bring in much-needed capital, state-of-the-art technology, and global best practices. FDI in defence has been increased to 49%, subject to certain conditions. FDI norms in constructions and development sector have been relaxed. Continuous evaluation of inverted duties is being undertaken to make Indian industries competitive. Stress is being laid on research and innovation, while focusing our attention on manufacturing for creating more jobs. My government will continue to work on our formidable strength in the service sectors. Honourable governments, my government is committed to realize
the true potential of entrepreneurs in India by nurturing MSME sector. 21 MSME clusters are being supported by providing soft skills and common facilities through 965 interventions. Khadi and village industries and traditional industries clusters are initiated in border, hill and poverty-stricken areas of the country. Focus is on technology upgradation, better financial access and market linkage to MSME units. Textile sector is the second largest employer after agriculture, providing direct employment of over 4.5 crore people. The sector also contributes 1/7 of industrial production and brings more than 1/4 of the country's foreign exchange inflows. The growth and all-round development of this sector has a direct bearing on the improvement of our economy, particularly the poor artisans. Recent initiatives like setting up a trade facilitation centers in different parts of India, bringing textile marketing online, incentives for technical textiles, promotion of Pashmina, special focus on increasing the coverage of northeastern part of the country would lead to advancement of this sector. Honorable members, cities are the engines of economic growth. My government is committed to building modern amenities and infrastructure in our urban areas. The National Urban Development Mission is being finalized, particularly focusing on water and solid waste management infrastructure. After extensive stakeholder consultation, the Smart City programs is close to finalization. These two programs are interlinked and will prepare our nation for an increasingly urban future. Honorable members, robust infrastructure is critical for ascertaining economic development and reviving economic growth. Indian railways are the arteries of our economy. My government is committed to reform and infuse new vitality into the sector through better services, improved passenger safety, and increased movement of freight. 2 dedicated freight corridors, namely Eastern DFC and Western DFC, are likely to be commissioned by 2019. Action for conducting feasibility studies for the Diamond Quadrilateral project of high-speed trains connecting Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata has been taken up. Metro rail projects have been sanctioned for Ahmedabad and Nagpur. Honorable members, several policy initiatives to revive the highway sector have been taken. National Highways Infrastructure Development Corporation Limited has been set up for creation of infrastructure in the northeastern states and border regions of the country. New standards have been set to improve quality of roads both on highways and in the rural areas, and electronic tolling has been introduced for hassle-free traffic on selected highways. E-rickshaws and e-cart have been introduced as a separate category under the Motor Vehicle Act 1988, enhancing convenience of passengers and generating thousands of jobs. My government has taken proactive steps to promote shipping industry. These include giving lifetime licenses to Indian ships, allowing Indian ships to flag out of country's waters freely, reduction of excise duty on the bunker fuel, and reduction of customs duty on the steel scrap of ship breaking. Government has also formulated Sagarmala projects to promote port-led development of the coastal regions and communities. As part of Make in India, initiating ship designing capabilities
shipbuilding and ship repair activities will be strengthened. An environment is being created to increase the Indian shipping tonnage and to reduce the transaction time on ports. An institutional arrangement for comprehensive development of national waterways for transportation has been envisaged through the Jalmarg Vikas project. Honourable members, power sector has made commendable progress, achieving 76% capacity addition by January 2015 against the 2014-15 target of 17,830 megawatt. In order to provide 24/7 quality power in rural and urban areas, the Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana, with an outlay of more than Rs 43,000 crore, and the Integrated Power Development Scheme, with an outlay of more than Rs 32,600 crore, have been launched. Special attention is being paid to the unelectrified villages in remote areas. My government has started major projects for improving transmission and distribution systems in the northeastern states. We all focus on developing and strengthening the national grid by developing high-capacity power corridors. To deepen the reforms in the electricity sector, the Electricity Amendment Bill 2014 has been introduced. The ambitious National Smart Grid Mission and Energy Saving Scheme have been started. My government has enormous emphasis on clean energy. The share of renewable energy in electricity generation is being significantly enhanced from 6% to 15% of the energy mix in the next 7 years. The scheme for setting up 25 mega solar parks has been approved. The implementation of the Green Energy Corridor Scheme has been accelerated. Setting up of solar generating capacities along the international borders will be a key area of attention. My government has made successful efforts in attracting the global investors in this sector. Similar attention is being paid to biomass, hydroenergy. Government will further expand India's nuclear power capacity with the highest global standards of safety and technological standards. Honourable members, the petroleum sector has seen major reforms. Diesel prices have been deregulated and are now market-driven. The price of petrol has been decreased by more than Rs 17 per litre. The government has put to rest all speculations regarding the long-pending issue of revising gas prices and put in place a prudent policy in national interest. The ethanol policy has been revised to promote use of ethanol in petrol and help sugarcane farmers. My government is committed to optimize utilization and transparency in allocation of natural resources. The process for auction of coal blocks has been started in a manner which will reduce the power costs in the country, provide adequate fuel to increase power generation, enhance production of steel, cement, aluminium and other essential materials. This will also provide huge resources from allotment of mines to the mineral and coal-bearing states, particularly in eastern areas, for accelerated development of the region. The swift and timely action taken by my government in this regard prevented the closure of mines which otherwise would have rendered thousands jobless. In coming years, my government would make focused efforts to expand exploration capacity and to increase domestic coal production to 1,000 million ton per annum. Honourable members, water is the lifeline of human civilization.
River Ganga has a very special place in the collective consciousness of our country. Namami Gange, an integrated Ganga conservation mission, has been set up with budgetary allocation of more than rupees 2,000 crore. The government is fully committed to the implementation of interlinking of river projects with due consultation process. My government took several proactive steps for protecting wildlife and for promoting cleaner environment. Stringent emission norms for certain industries were prescribed. Real-time online monitoring of industrial units in 17 critically polluting sectors was started and National Air Quality Index launched. Compensatory afforestation, fund management and planning authority would be strengthened and adequate funds released to states and union territories for aggressive afforestation and wildlife protection. Government has taken significant steps to streamline clearance process in environmental sector by bringing in transparency and by empowering state governments. Online application process for environment, forest and CRZ clearance were introduced from July 2014. Honorable members, the enormous potential of the tourism sector, a new tourist policy for growth and sustainability of tourism is on the anvil. Tourist visa on arrival, enabled with electronic travel authorization, has been expanded to 44 countries. Infrastructure and amenities are being upgraded in major tourist and pilgrimage destinations. River ghats in several pilgrim destinations are being renovated. A special initiative for protecting and preserving the sanctity of our tourist destinations and monuments of national heritage has been launched. Dedicated tourist trains covering Jyotirling circuits, Sikh Mangal circuits and Dakshin Dham circuit have been started. A new scheme has been launched for development of tourist circuits called Swadesh Darshan, which includes Krishna Circuit, Himalayan Circuit, Coastal Circuit, Buddha Circuit and Northeast Circuit. A Statue of Unity is being constructed to commemorate the memory of Sardar Vallabhbhai Patel. Honorable members, my government is committed to restore and rejuvenate the soul of cities that are home to rich cultural heritage of our country. A scheme, Heritage Development and Augmentation Yojana, Hridoy, covering 12 cities in the first page, has been launched with the predominant objective of preserving the tangible and intangible cultural assets of these cities. A special scheme called Prasad, Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive, has been announced for rejuvenation of 12 pilgrim centers in convergence with Hridoy. Honorable members, terrorism and left-wing extremism pose a grave challenge to the internal security of our nation. My government is firmly committed to deal with these challenges in cohesive collaboration with the affected people and governments of the affected states in a holistic manner. Kashmir occupies a place of enormous importance in the agenda of my government. Government has endeavored to create a conducive and enabling environment in the state of Jammu and Kashmir, especially for the various displaced segments of its population. This includes facilitating the rehabilitation
of over 60,000 Kashmiri Pandit families. The government has taken effective steps in this regard. These include inter alia, providing government jobs, economic opportunities and security. During the recent unprecedented flood situation in the state, my government made special efforts in collaboration with the state government to minimize the impact of the disaster and augment rehabilitation measures. The nation is deeply indebted to our armed forces and paramilitary forces for the outstanding service rendered during the relief operations to flood-affected people in Jammu and Kashmir. A high state of disaster preparedness is the key to contain loss of life and damage to the property due to any natural disaster. This has been amply demonstrated during the response to the very severe cyclone Hudhud by the state governments of Andhra Pradesh and Odisha together with the central government. Honorable members, my government is committed to implement the idea of smart police to provide efficient, courteous and effective citizen services and meet the operational needs of the police personnel, including women police personnel. Modernization of our armed forces with a strong emphasis on Make in India in defense acquisition plans. Several initiatives have been taken to expand domestic defense industry, including liberalization of FDI for the defense sector, a new defense export strategy, a liberalized process for issuing clearance for defense exports, and a technology development fund to encourage domestic manufacturing of defense equipment and decrease import dependency. The list of defense items which requires industrial licensing has been pruned. Honorable members, our space journey continues to make impressive progress. On 24 September 2014, Mongolian has successfully placed in the Mars orbit, making India the first country to do so in the first attempt. We successfully launched the first experimental flight of GSLV Mark III on 19 December 2014, which will enable us to launch heavier satellites in the near future. My government is committed to use space technology and its applications in governance, social and economic development, and resource management. My government has also decided to launch a satellite for the use of SAARC countries to foster greater partnership and development of South Asian region. My government is committed to deeper penetration of electronic media in remote and distant areas. Auctions will be conducted for 135 vacant channels in 69 existing cities of FM Phase 2 as part of the first batch of FM Phase 3. It will also facilitate migration of FM Phase 2 to FM Phase 3. This will take private FM radio to cities having population of more than 1 lakh and border towns of Jammu and Kashmir, northeastern region and island territories in a phased manner. Our developmental challenge will continue to shape these strategic priorities in science, technology and innovation. Steps are being taken to channelize more resources in research and development in India, build world-class research centers,
nurture young talent, and promote international collaboration, including in the world's largest optical 30-meter telescope. Honorable members, recognizing that our destiny is linked with our neighborhood, my government has reinvigorated our relations with our neighbors and is promoting a greater cooperation and integration in South Asia. At the same time, we speak clearly about our interests and are fully prepared to defend our borders and secure our people.